हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग बुल्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रॉड। करंट टाइम में आज के इंटरनेट के इस युग में फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा आपको सुनने को मिलता होगा, या फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार किसी न किसी तरीके से कोई इंडिविजुअल या पर्सन, आपका दूर का रिलेटिव, वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो जाता है। सो आज का यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि हम फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार न हो, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस पॉइंट्स को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रॉड। नेवर वायर मनी टू अ स्ट्रेंजर। डोंट गिव आउट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेवर click on hyperlinks on emails. Use to crack password. Never give out your social security number. Install antivirus protection. Don't shop with familiar online retailers. Don't download software from pop-up windows. तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी अपना इंफॉर्मेशन मनी रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड किसी भी अनजान व्यक्ति को कभी ना दें। डोंट गिव आउट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसी भी अनजान ईमेल के लिंक को कभी भी ओपन ना करें। पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। सोशल सिक्योरिटीज़, सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें। इंस्टॉल एंटीवायरस। अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या डेस्कटॉप के ऊपर में आप प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करें। और किसी भी ऐसे अनजान रिटेलर्स के वहाँ से आप कोई भी शॉपिंग मत करिए। डोंट डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम पॉपअप विंडोज़। कोई भी पॉपअप विंडो है वहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड ना करिए। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फाइनेंशियल स्कैम्स। So let's start. Okay, financial fraud. What is a financial fraud? Financial fraud actually होता क्या है? Financial fraud happens when someone deprive you of your money or otherwise harms your financial health through misleading or other illegal practice. This can be done through a variety of methods such as identity theft or investment fraud. What is a financial fraud? Most victim compensations programs do not cover the money lost to fraud or fraudulent schemes. You must check for your specific state law regarding victim compensation. Civil justice may be the only legal option to recover lost money. Why is financial fraud so important? It is important to report the crime to appropriate agency and law enforcement as soon as possible, irrespective of the type of financial fraud. Fraudulent charges should also be disputed or cancelled as soon as they are discovered as well. Furthermore, victims should collect documentation related to the crime such as the bank statement, credit report, tax form from current and previous year, and continue to file important information throughout the reporting process. Financial types of financial crimes. Identity theft. यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि कितने प्रकार के फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं। पहला है आइडेंटिटी थेफ्ट। समवन स्टेल योर personal financial information such as credit card number or bank account number to make fraudulent withdrawal from your account. Sometimes people will use the information to open credit or bank account and leave the victim liable for all the charges. Identity theft may lead to damaged credit rating, bounced check, and being pursued by the collection agencies. Number two, investment fraud.
This type includes selling investments or securities with false, misleading information. It could be false promise, hiding facts, and insider trading tips. Number three, mortgage and lending fraud. Third party may open a mortgage or loan using your information or using false information. In another case, lender may sell mortgage or loan with inaccurate information, deceptive practice, and other high pressure sales tactics. For mass marketing fraud, the fraud is committed through mass mailing, telephone calls, or spam emails. It also includes fake checks, charities, lotteries, honor societies, initiatives, and more. These modes are used to steal personal financial information or to raise contribution to fraudulent organization. एक जनरल आइडिया है 2018, 2019, 20 और अप्रैल से जून 2020 में कितने फ्रॉड केसेस इंडिया में रजिस्टर हुए, ऐसे कितने केसेस हैं जो कि रजिस्टर होते ही नहीं हैं। यह एक जनरल आइडिया है फाइनेंशियल ईयर वाइज कि कितने फ्रॉड केस अब तक रिकॉर्ड हुए, जिस इज जस्ट वन स्नैपशॉट। बैंक के कितने फ्रॉड हुए, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक के फ्रॉड के केस, फॉरेन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कितने फ्रॉड के केस रजिस्टर हुए, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स, लोकल एरिया बैंक। सो आप देखिए 2018-19 में 6,799 6799 केसेस नंबर ऑफ फ्रॉड्स के रजिस्टर हुए 18-19 में। 19-20 में ऐसे केसेस 8,707 केसेस रजिस्टर हुए और अप्रैल टू फर्स्ट क्वार्टर 20 में 1,558 केसेस ओनली वन क्वार्टर में रजिस्टर हुआ। दिस इज द वन स्नैपशॉट ओनली। This snapshots fraud trending in India, fraud trends in India as financial inclusions। आप देख सकते हैं इस स्नैपशॉट में कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के माध्यम से फ्रॉड के केसेस इंडिया में ट्रेंड जो है वो अभी फ्रॉड के बढ़ते चले जा रहे हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड इन द क्रेडिट सिस्टम, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेंगे, market alerts frauds, fraud contact information, fabrication of documents, third party fraud, fraudulent organization, and syndicate fraud. So, carnival of frauds. Nationalized banks have a lead the way in fraud, with PNB an outstanding performer should file account of willful defaulters. This is the snapshot for banking fraud. Nationalized bank, you all know PNB scam, State Bank of India and Associates scam, private sector banks, total of all banks and financial institutions. This is the snapshot for fraud cases. How to protect yourself from financial fraud? This is the most important topic to understand everyone. 5 common types of phishing. Email phishing. Scammer create email that impersonate legitimate companies and attempt to steal your information. This is the most dangerous type of phishing. So always आप ईमेल फिशिंग के शिकार कभी मत होइए, हमेशा इसका ध्यान रखिए। स्पीयर फिशिंग क्या है ये? सिमिलर टू ईमेल फिशिंग बट द मैसेज आर मोर पर्सनलाइज्ड। फॉर एग्जांपल, दे मे अपीयर टू कम फ्रॉम योर बॉस। क्लोन फिशिंग ये क्या है? स्कैमर्स रिप्लिकेट एन ईमेल you have received but include a dangerous attachment or link. Walling ये क्या है? Scammer target high ranking executive to gain access to sensitive data or money. Pop-up phishing, fraudulent pop-up trick user into installing malware. So Ponzi schemes, this is one type of fraud. What is Ponzi schemes? Ponzi scheme fraud.
बिगेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड। आजकल कई कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत ही धोखाधड़ी कर रही हैं, कृपया आप इनसे सावधान रहिए। पॉन्जी स्कीम्स, एक्चुअली पॉन्जी स्कीम्स क्या है, हम इस पे एक नज़र डालते हैं। व्हाट वाज द स्कैम? शारदा स्कैम, ये सभी को मालूम है शारदा स्कैम क्या है। व्हाट वाज द स्कैम? ए पॉन्जी स्कैम रन वाया ए ग्रुप ऑफ 239 कंपनीज क्रिएटेड टू फूल सेबी। व्हाट वाज प्रॉमिस्ड? क्या प्रॉमिस किया था पब्लिक से? पीपल वेयर प्रॉमिस्ड 50% पर एनम रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स डबल द मनी इन 3 years। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ था दैट टाइम शारदा स्कैम में? एजेंट वेयर आस्क्ड टू ऐड इन्वेस्टर्स वाया पिरामिड स्कीम्स on a commission of 25 to 40% on deposits. What was the charm? Famous Bengali personalities from TV, sports, politics, film industries all promoted the schemes. Bengali channels run advertisement 24/7. How scam was unearthed? The scam died when the scamsters run out of ideas to cheat investors and their input frauds become lower than output fraud. So how a Ponzi scheme works? ये Ponzi schemes, जो Ponzi schemes है वो किस तरह से काम करता है, यह एक स्नैपशॉट है। इसमें आप बहुत आसानी से इस Ponzi schemes को आप समझ जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे आप इसको समझेंगे? दिस इज द लेवल वाइज, फोर्थ लेवल, थर्ड लेवल, सेकंड लेवल एंड टॉप लेवल। सबसे ऊपर टॉप लेवल पे स्कैमर बैठा है, वो इन्वेस्टमेंट के नाम से आपको ब्रेन वॉश करके इस पॉन्जी स्कीम का अपना एक हिस्सा बनाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस इज द वन स्नैपशॉट। पॉन्जी स्कीम्स or in other language, this is the pyramid scheme scams, financial scams and pyramid scams, a type of financial fraud which people pay to join an organization in exchange for the right to sell membership to other people. This is the pyramid schemes, a type of financial fraud in which people pay to join an organization in exchange for the right to sell membership or right to sell the product to other people. How does a Ponzi scheme works? So here are the brief description about how does Ponzi schemes work. Okay, let's next slide. My money, my info, I don't think so. To stop fraud. Take 5 to stop fraud. How to protect yourself. Criminals are experts at impersonating people, organization and the police. They spend hours researching you for their scams, hoping you will let your guard down for just a moment. Number one, be absolutely certain who you are speaking to. A genuine bank or organization will never contact you out of the blue to ask for your PIN, full password, or to move money to another account. Only give out your personal or financial details to use a service that you have given your consent to, that you trust, and that you are expecting to be conducted by. Before you share anything with anyone, stop. Then pause to consider what you are being asked for and question why they need it. Unless you are 100% sure you will talking to, don't disclose any personal or financial details. Number 2, don't assume an email, text or phone calls is authentic. Even if someone seems to know your basic details, it doesn't mean they are genuine. In an attempt to gain your trust, fraudsters may claim you have been a victim of fraud. They often do this to get you talking, then try and persuade you into giving them
your security details. Number 3, don't be rushed or pressured into the making a decision. No genuine bank or trusted organization will under any circumstances force you to make a financial transaction on the spot. Neither would they ask you to transfer money into neither account for raising relating to fraud. You if you are asked to do this, then stop and consider what they are asking you. Listen to your instincts. Does a such a situation feel wrong or strange? If so, it's usually right to question it. Fraudsters will try to manipulate you. They will try and uh, you into false sense security when out and about are really on your defense being down. You will at home. They will try to appear trustworthy, but they may not be what they appear. Stay in control. Be confident. It's always okay. Stop a conversation. You can always refuse unusual request for proposal or financial information. So, wire transfer fraud. The rising trends, what you need to know to keep you and your clients safe. Number 1, use strong or unique password. Number 2, use antivirus software. Number 3, don't click on any links. Number 4, communicate with your team. Don't assume changes are secure. Number 5, keep and check records of financial institutions. Number 6, encrypt emails and follow company protocols. Number 7, the vigilant and caution particularly of changing instructions. And last, number 8, always confirm via telephone from independently confirmed numbers. Do's and don'ts. We have discussed about do's and don'ts. Number 1, do not pay money for any schemes or product right after the first phone calls. Number 2, cross questions the caller who asked for crucial details. Number 3, if an offer an email seems too good to be true, like a lottery or free gift, it is. Number 4, if a email or calls ask you to deposit fee or charges, it's probably a scam. Number 5, ignore calls from unknown numbers and do not call back. 12 online safety tips to everyone needs to learn. A stranger online, still a stranger. Don't lie on social media. Don't believe everything you see online. Remember, anything you share, stay online forever. Do not keep secret from your parents. Too much of anything can be bad. Use the internet wisely. Do not share personal information. Like and followers are not really the important. Do not be rude online. Use the internet and social media for good and to learn. Don't click all links. Cyberbullying is wrong. So, how fraudsters target investors? Number 1, internet fraud. This is the different type of fraud: internet fraud, microcap fraud, pump and dump schemes, Ponzi schemes. This is the different type of fraud. Top 10 financial scams in India. So here we have discussed about scams in India. Insurance scam 1947, security scam 1992, Harshad Mehta scam, UTI scam 2001, home trade 2000, security scam Ketan Parikh 2001, DSQ software scam 2001. Okay, take care. Please subscribe our YouTube channel. Thanks for watching. Thank you very much from